Hello guys, welcome to the Kalakar TV. Shoaib Ahmed back again with another topic of grammar, that is adverb. आज हम पढ़ने जा रहे हैं adverb, उर्दू में इसको कहते हैं ज़र्फ. An adverb is an addition to the meaning of a verb, adjective or an other adverb. हमारा जो ज़र्फ होता है हम तभी यूज करते हैं जब हम किसी भी वर्ब, हमारे फेल, हमारी सिफत या हमारे कोई दूसरे ज़र्फ की मीनिंग में कोई हम एडिशन करते हैं, कुछ उसमें डालते हैं, मतलब उसमें कोई इजाफा करते हैं उसकी मीनिंग में, तो हम उसे कहेंगे कि हमने एडवर्ब यूज किया यानी कि ज़र्फ यूज किया. यहाँ इसकी एक्यूरेट डेफिनेशन है, मैं आपको बता देता हूँ. An adverb added to a verb, adjective or an other adverbs to time, manner, place, degree or etc. So मैंने आपको बताया कि एडवर्ब यही है कि किसी भी वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव की मीनिंग में हम इजाफा करते हैं. किस तरह इजाफा करते हैं? हम टाइम बताते हैं, टाइम में हम इजाफा करते हैं, मिनट्स बताते हैं, प्लेस बताते हैं, डिग्री, ये हम बता के किसी भी वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब की मीनिंग में एडिशन यानी कि इजाफा करते हैं. यहाँ इसके एग्जांपल्स हैं, देखिए आप. I drive a car carefully. I drive a car carefully. इसमें हमने देखे, हमने ड्राइव यूज किया है, ये हमारा वर्ब है. ड्राइव अ कार केयरफुली, ये हमारा जो केयरफुली है ये इसको सपोर्ट कर रहा है. जो हमारा भी एडवर्ब होता है वो वर्ब को सपोर्ट करता है, ये एडवर्ब वर्ब को सपोर्ट कर रहा है, तो हम कहेंगे केयरफुली हमारा एडवर्ब यानी कि ज़र्फ है. यहाँ एक और एग्जांपल है. You like him very much. आप उसे लाइक तो करते हैं बट बहुत ज्यादा. ये very much जो हमारा एडवर्ब है ये इस वर्ब लाइक को सपोर्ट कर रहा है. यहाँ दूसरे भी है, स्लोली है, जैसे हमारा इजीली है, कॉमनली है, ऐसे कई ज्यादा एडवर्ब है. Generally there are the 7 kinds of adverb. So let me tell you. Number 1 is adverb of time. Adverb of time, an adverb which tell us the time, we can say that is adverb of time. That is ago, before, then, that is the time. When we are supposed to be tell the time, we can say that it is adverb of time. And the number 2 is adverb of place. Adverb of place. Whenever we are supposed to be tell the place, we can say that it is adverb of place. Like there, here, where, that are the adverb of place. And on the 3rd number there is adverb of manner. It is the adverb of manner. An adverb which tells us a manner, we can say that it is an adverb of manner. And on number 4, adverb of number. An adverb which shows the number or quantity number, we can say that it is adverb of number. Like secondly, firstly, once, twice, that are the adverbs of number. And on the 5th number we have adverb of quantity. Those adverbs which tell us the quantity, we can say that those are the adverb of quantity. On the 6th number we have interrogative adverb. Those adverbs which ask question, we can say that those are the adverb of interrogative or interrogative adverb. Like when, why, when, how, they are the adverb of interrogative or interrogative adverb. And hence last adverb, relative adverb. An adverb which make a relation between two sentences, that is known as relative adverb. Like than, since, but, those are the adverb of relative or relative adverb. Thank you.